A very good evening, ladies and gentlemen. If I'm audible and visible, body, God made. Now, what will happen? I'll tell you. For example, you come to my. Now, what will happen? Now, do you think ये इतना बड़ा? And the almonds nutrient was. Yes. Can you see? Okay. Now, let's say through which blood is almost 100%. Flow is increased. Now, the blood is. यहाँ पे भी it is trying to grow, but यहाँ पे भी वो थोड़ा सा रुक जाता है because there is blockage, then it is going. And in this part, it is not going. And in this part, it is not going. So, what happened? God, when made our body, God made collateral arteries. Collateral arteries. Like you buy a new car, there's a stepney, a new tire, right? When one tire is not working, you can change the tire. That tire will work. Similarly, when there is a blockage, these are the collateral arteries. You seeing this? These are the collateral arteries. It is not just in heart; it is in your entire body, from your head to your toe. These are the collateral arteries, right? These are the collateral arteries. So here also there are collateral arteries. Now, what happens when there are 60%, 70, 80, 100, whatever blockage is that, body is made in such a way that this end, this thing will open, and blood which was unable to go from here, let's take the example of artery which is 100% blocked. The blood which was unable to go from here because it is 100% blockage, blood will go from here. Getting my point? Blood will go from here and it will, so the person will be protected from heart attack, right? Because there's a blockage, blood gaya nahi to heart attack. Now, still heart attack comes. Heart attack comes when a person वो सीढ़ियाँ बहुत तेज चढ़ गया, या कोई नेगेटिव थॉट आया, या फिर 2:30 AM to 4 AM the heart beats so fast, वो blockage फंस गई बीच में, person dies, right? Now heart attack comes when the blood was unable to go through arteries because of blockage, and the collateral arteries did not open, right? If you're understanding, just type AC. Yeah, heart attack comes when there was blockage, the blood could not go through the arteries and the collateral arteries could not open, right? अब हमें कुछ ऐसा करना है कि our collateral arteries are open 24/7/365 without any medication, right? वो कैसे होगा? To increase one molecule in your body, and the name of that molecule is NO, nitric oxide. Few of my friends, they are selling this diet with the name of nitric oxide, right? NO diet. Not nitric oxide diet, right? So how you will increase the nitric oxide diet? It's very simple. When you start eating raw, two changes will come. One, XXX cleaning होगी, right? Number 2, nitric oxide बनेगा. When the nitric oxide इसको खोलने का रास्ता है, right? So blood will go from there. Like traffic is there, खूब ट्रैफिक लगा है, सारी all the cars are stuck, but वो साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, वो निकाल के ले जाता है कहीं से, ऐसे कर करके ले जाता है. तो same thing, blood wants to go. तो nitric oxide आपको उसके जो ends हैं, you have to open it, and it is only possible through nitric oxide. Please read this book for eye opener. Now, all the history says that there is no evidence that an animal gets heart attack. हार्ट अटैक किसको आता है? जब हम पिंजरे में मंकी को डाल देते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर खूब खुशियां होती है कि देखो उसको हार्ट अटैक आ गया, बट उस पे जो टॉर्चर किया था उससे हार्ट अटैक आया उसको, राइट? तो ये अगर हम खोलेंगे, नाउ इसके बाद सेकंड एग्जांपल, यू जस्ट गो टू YouTube एंड टाइप बिल क्लिंटन ऑन, हाथ पर ये येलो मत करो, गलती से हो गया वो, कोई बात नहीं. तो हाँ, Bill Clinton on the China study. Bill Clinton on the China study. So what happened in Bill Clinton case? मैंने बताया था 4 lung surgery and 3 heart surgeries. And he says somebody told me about the China study and I was able to put off stents of my heart. And now he's all alive. He says I feel 20, 30 years younger. So what he did? He increased nitric oxide in his body. Right? So try to understand. ये बात सबको clear है? Just type AC. Just type AC. Right? Now, one more example I will give you.
How many of you are eating supplements or had eaten supplements before? Cool. No problem, no problem. हाथ पर हो जाता है कभी कभार. So it's okay, right? गलती से भी होगा. It's fine. Protein after COVID I was taking. Now see what this supplements is doing, right? Now this is your cells. Let's say this is your cell, right? What I said, there are 70 trillion cells. उसमें करना तो वो मूवमेंट is it. So 2015 or 16 I took those classes of mindfulness and I did not take any action. And out of the blues I just first time I applied on my student. I'm not saying this program is not, or had eaten supplements before. Cool. No problem, no problem. हाथ पर हो जाता है कभी कभार. So it's okay, right? गलती से भी होगा. It's fine. Protein after COVID I was taking. Right. Now see what this supplements is doing, right? Now this is your cells. Let's say this is your cell, right? What I said, there are 70 trillion cells. उसमें से एक सेल ये रहा. मैंने आपको सनलाइट का एग्जांपल दिया था. उसमें they are receptors. कोई छोटा कोई बड़ा, right? छोटा कोई बड़ा receptor होगा, right? Now let's say you eat something and it has glucose in it, so glucose will go from glucose का receptor. You eat calcium, वो calcium के receptor से जाएगा. विटामिन B12 कर दो, B12, right? Selenium, sodium, calcium, कुछ भी कर दो, right? Now everything is inside, right? Now when you eat supplements, now try to understand. Let's say you eat mango, or let's say you eat some nuts. आपने nuts खाए, काजू बादाम ये सब आपने खाया. Now nuts में क्या है, calcium भी होता है उसमें. तो this is ये रहा calcium. Now the nuts which you eat, which is something natural, the size of the nutrient was this much, इतना बड़ा था. और उसको किसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है. Now the window of the calcium is so small, and the almonds or the cashew or this Brazil nut which you eat, which went to your body, the nutrient was this much big. Now what will happen? Now do you think ये इतना बड़ा इस calcium के receptor में जाएगा? नहीं जाएगा. But the good thing is it is natural. Now what will happen? I'll tell you. For example, you come to my house and it was raining outside. Right? It was raining outside. It was raining. So you had an umbrella. Now when you come to my house, now you come inside, you have umbrella, but the umbrella वो दरवाजे से टकरा रहा है. Umbrella is more चौड़ा and दरवाजा is less breadth. So what you will do, you will close the umbrella and come inside my house, and after coming in, you can open the umbrella. Now this is the same way this will act. This natural calcium will act. It will go inside over here, and when it reaches here, ये अपने आप को squeeze कर लेगा calcium, and it will go inside the receptor. It will go inside the cell. और अंदर जाके अपने आप को बड़ा भी कर सकता है. Now let's say ये calcium था which you eat. अब वो जो आप calcium खा रहे हो वो smaller than receptor भी हो सकता है, bigger than भी हो सकता है. If it is bigger, now when it will go over here, it cannot shrink itself. वो जबरदस्ती जाएगा. जैसे ये छोटा छेद है, वो जाने की कोशिश कर रहा है. तो एजेस जो है रिसेप्टर्स के वो इन्फ्लेम्ड होंगे. तो वो आप नुकसान ज्यादा कर रहे हो, और वो अंदर जाके वो विटामिन डी की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि इट इज मैन मेड. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब ये सप्लीमेंट स्टार्ट कैसे हुए, हमें ये समझना है. राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपने किसी के कहने पे यू स्टार्टेड
this vitamin, that vitamin. Now let me tell you how it started. In 1960, FDA of America wrote an article that massive doses of vitamin C is good for human beings. ये आपको massive doses of vitamin C लेना है, it is good for human beings. Now I am a businessman. मैंने वो आर्टिकल पढ़ा and I published my one brochure. मैंने आर्टिकल वो ब्रोशर अपने यहाँ पे ब्रोशर चिपकाया मैंने वो गो नेचर विशाल सैनी आई एम द फाउंडर गो नेचर ये वो सो एंड अंदर मैंने फोटो लगाई आर्टिकल की नाउ इनसाइड इज द फोटो ऑफ द आर्टिकल you see massive dose of vitamin C यहाँ पे FDA का लोगो लगा दिया and I came to you ma'am sir are you eating vitamin C आप कहेंगे yes I am taking lemon I am taking oranges mango ये वो सो I am saying are you eating 25 oranges no 25 तो नहीं Monday I have made this capsule I have made this supplement in which we have extract of 25 oranges that time people actually thought सही तो कह रहे हैं FDA thought सही बात है now let me give you an example you came to my clinic from your car now you're going back and I'm coming outside to see you off in how the bye bye thank you bye now I ask you a question what do you think is the most important thing in your car right and your answer is you think and say engine okay so I do one thing I take off the engine of your car और सड़क पे रख दिया मैंने on the road please sit on the engine and you will reach your house Delhi or Bombay very low what stupidity similarly if you take the vitamins calcium minerals of some fruits and vegetable it is like that car as a whole then you will be able to reach your destination there are tires there is engine there is steering there is gear there is brake there is oils right there is barometer there is AC there is roof there is sofa right there is so many things in the car then it is a car similarly वो vitamin C निकाल के उसका कैप्सूल बना दिया it is like you कार में से इंजन निकाल के उसका बैठ जाओ there are 50 musicians in front of you and you are doing like this la 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 it is a music now if I stop if I put my hands down right they don't know what to do so similarly what I'm saying if I ask you what is in one bite of apple अब दो तीन नाम ले दोगे फाइबर है नेचुरल ग्लूकोज है विटामिन सी है ये है one apple has 175 micronutrients when it goes inside your body it is like वो 80-90 जो म्यूजिशियंस हैं उनको पता है कहाँ पे जाके कहाँ फिट होना है राइट एंड उस एप्पल का if I take out vitamin C and this और उसको मैं कैप्सूल बना के ये खा लो it is like कि आपने गाड़ी का इंजन निकाल के उसमें खा लो अब ईटिंग कैल्शियम विटामिन्स ये अब पीपल से आपको पता है ये विटामिन की कंपनी सप्लीमेंट्स की कंपनी every week they are in front of my clinic they are sending मैंने instructions दिए अपने मैं कहा कोई आया बोलो सर है नहीं और they are sitting in front of me right they are sitting in front of me country head continent head देखा हो कहीं बोलते अच्छा बोल लेता है कन्विंस कर लेगा लोगों को सप्लीमेंट्स दे देगा सारे सप्लीमेंट्स you know in front of my table और एक सप्लीमेंट निकाला ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का मैं भी देख रहा हूँ सर व्हाट इज दिस मेरी आंखों में देखते हो पॉज सर ये इंडियन ओशन में हमारे गोताखोर जब जंप लगाते हैं तो वहां जमीन पे जो एकदम सतह में एकदम डीप ओशन जहां पे वो काई होती है उसका कैप्सूल बनाया है ये कछुए खाते हैं आपका पेशेंट 100 साल जिएगा अब मैं हंसूं क्या बोलूं मैंने कहा अच्छा वो ब्रीदिंग से कुछ लेना तो नहीं है कछुए का समथिंग लाइक दैट तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर सप्लीमेंट लोग कहते हैं ना कि यार मैं अगर फलान आई वाज डूइंग दैट बिजनेस आई वुड हैव अ मर्सिडीज स्टैंडिंग आउटसाइड माय हाउस ट्रस्ट मी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी if I was into the supplements industry if I was saying yes and I was selling the supplements not Mercedes outside my house I would have a helicopter standing so try to understand this supplements is a business it is a profession can be compromised what I am doing what naturopathy is not me what naturopathy is it is principles I cannot do I cannot tell you to eat supplements so if you are someone who is eating supplements now people say कि सर मैंने ठीक है आई एम कन्विंस्ड कि सप्लीमेंट नहीं खाना चाहिए बट व्हेन आई एट दैट सप्लीमेंट्स मुझे तो फायदा हुआ था तो वो कैसे हो गया द वे मेडिसिन इज डिजाइंड कि वो ब्लड से निकाल के जस्ट थ्रो इट इनटू द अदर सेल्स सिमिलरली दिस सप्लीमेंट्स आर आल्सो डिजाइंड टू एक्सट्रैक्ट नाउ सी इन दिस रिसेप्टर यू हैव कैल्शियम ग्लूकोज right vitamin B12 now let's say you have vitamin B12 deficiency I say you eat this vitamin B now that goli will what will do it will take the vitamin B12 from that cell and put it in other cell it is all designing it is all drug scientist knows what to do what not to do
So in a nutshell, supplement is a man-made thing. Your liver doesn't recognize it, and if by any chance the molecule when you eat it is bigger than the size of the receptor, it will not go inside. It will create inflammation. Like this is a mobile. कौन सी कंपनी का है? Vivo का मोबाइल है ये. Now this Vivo mobile and my mother has Motorola. They both have same chargers, right? Now we are, let's say we are somewhere in the railway station and we have to charge, right? So there is only one socket. Now me and my mother both are fighting. मैं लगाऊंगा. So similarly, sometimes some nutrients they have same sockets. Like socket means receptors. Like aspirin, a brain medicine, warfarin, heart medicine. They have same receptors to go. They both go and work on pain. So if by any chance a person is aspirin also, warfarin also, तो वो एक ही receptor में जा रहा है और लड़ रहे हैं कि मैं पहले जाऊंगा कि मैं पहले, right? Now what does this glucose medicine does? I'll tell you. Diabetes के लिए ना. Now this is the receptor of glucose, right? Now you अब ऐसा क्या हुआ कि you eat metformin a दवाई and your glucose is normal, है ना? मैंने ये तो बोला था. ऐसा क्या किया? Now let me tell you. ये आपका सेल है, उसमें ये ग्लूकोज का रिसेप्टर है. आपने यू ईट मेडिसिन ऑफ डायबिटीज. नाउ दैट मेडिसिन विल गो एंड स्टिक हियर. ग्लूकोज के रिसेप्टर में यहां चिपक जाएगी. इट विल स्टिक ओवर देयर. एंड वेयर इज द ग्लूकोज? ग्लूकोज इज इन द ब्लड. इट इज फ्लोइंग इन द ब्लड, राइट? नाउ दिस मेडिसिन वो पकड़ के अंदर ठूसेगी. ग्लूकोज पकड़ के अंदर ठूसेगी, पकड़ के अंदर ठूसेगी, पकड़ के अंदर ठूसेगी. नाउ दिस मेडिसिन हैज लाइफ ऑफ 8 आवर्स. 8 घंटे बाद क्या दूसरी मेडिसिन. तो सिमिलरली बीपी मेडिसिन वो हार्ट के किसी रिसेप्टर पे जाके चिपकेगी, हार्ट को वीक करेगी. ब्रेन की मेडिसिन वो ब्रेन के रिसेप्टर पे जाके चिपकेगी, वो दर्द कम करेगी. पेन किलर, नाउ व्हाट डज पेन किलर डू? आपने दवा खाई, देयर इज नो पेन. व्हाट डिड इट डज, राइट? नाउ सी मैं यहां नंगे पांव बैठा हूं एंड देयर इज अ कील. मान लो कोई कील है. आई स्टेप ऑन दैट कील, दर्द हुआ, राइट? माय पैर इज नॉट आइस. मैंने तो देखा भी नहीं था. दैट ब्रेन सेंड द सिग्नल टू माय ब्रेन. I felt the pain. Brain says to the eyes कि भाई देख क्या है. मैंने देखा ओ nail है, right? Now what does the painkiller does? You eat the medicine. Painkiller will cut the signal of that pain. Pain is there, but you're not feeling it. And one time comes when you keep eating painkiller, it will not work, right? So this is it. I'm trying to explain you. If this part is clear to you and कुछ जा रहा है दिमाग में, तो प्लीज टाइप बल्ब ऑन, या जस्ट टाइप बल्ब ऑन. तो सप्लीमेंट्स नहीं चलो, वो चलेंगे नहीं सप्लीमेंट. देयर इज नो यूज ऑफ सप्लीमेंट्स, राइट? देयर इज नो यूज ऑफ सप्लीमेंट्स. हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड टिल हियर? यू नो हाउ मेनी ऑफ कन्विंस्ड? जस्ट टाइप IC मींस आई एम कन्विंस्ड, या? Because these supplements, this medicine वो 100 साल पहले नहीं थी. और हम इंसानों का इतिहास तो हजारों साल का है, लाखों सालों का है, तब भी तो लोग जी रहे थे, या? ठीक है. तो हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट्स के लिए वो नहीं कर पाएंगे जब तक वो किताब ना पढ़ लें या आंखें खुल जाएंगी आप, राइट? हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. एंड जस्ट 100 रुपीज और 65 रुपीज. आई सल्यूट दिस मैन, डॉक्टर विसूर रॉय चौधरी. व्हाट अ पर्सन ही इज, राइट? गट्सी पर्सन, गट्सी. सबकी नाम, ही इज टेकिंग नेम ऑफ डॉक्टर्स. कि भाई साहब आपने एक सर्जरी हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि मैं भूल रहा हूँ 30 मिनट्स में हार्ट सर्जरी. कहता वो शेव करने में 20 मिनट लग जाते हैं छाती को. नाम लिया उन्होंने डॉक्टर के. ठीक है, आगे चलते हैं. हेपेटाइटिस लीवर से रिलेटेड है, राइट? आइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, राइट? इंटेस्टिनल वॉर्म्स, this mostly happens in small children, बड़ों में भी हो जाता है. कैंसर पूरा ऑटोफेजी है. कुछ चेंज करना चाहें, ये this is all some extra that you can cancer patient can do. indigestion, toothache, jaundice. आगे चलते हैं, सब आप रीड कीजिएगा. inflammation of the gums, typhoid, kidney stones. ये मैं किडनी स्टोन का मरीज था. irregular bleeding related to all hormonal disbalance. मलेरिया, नोज रनिंग और ब्लॉक, साइनसाइटिस, राइट? मेरा भी फ्रेंड का है, वो साइनस वो काट ही दिया अंदर से. एक कहता है वो फैट बढ़ गया, वो काट दिया. अब क्या है, अब उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई. मेरा बचपन का दोस्त था, लिटरली बेगिंग, भाई मत करा, प्लीज मत करा, मुझको 1 महीना दे दो.
but his father was doctor, वो mindset ऐसा था कि नहीं, now he is like तड़प रहा है, right? उसको रात को जगाना पड़ता है कि भाई सांस तो चल रही है तेरी, something like that, कि वो और उसकी वो ब्लॉकेज और बढ़ गई, काट दिया। तो साइनस काट दो, कोलोन काट दो, यूट्रस काट के फेंक दो, ओवरीज फेंक दो, निकाल दो, मतलब these organs are ones। अपेंडिक्स को तो ये तो नॉर्मल सा है, आपको मैं जो आगे कोर्सेज बना रहा हूँ अपेंडिक्स का, I'll tell you it is one of the most important organ of the body। अब कितने लोग अपेंडिक्स निकाल देते हैं, राइट? तो try to understand this body is very beautiful and even this nose hair is so important, ये कितने वायरसेस को अपने पास चिपका देता है। Obesity, piles, rheumatic pain, rabies, scurvy, warts। Now one of my student Megha Sharma, Megha Agarwal, so one of what she had some warts in the fingers, right? So what happened, she went for this laser surgeries. After the laser surgery, spending so much, again it came. She came on the system, she came on this diet, in 20-21 days all her warts gone, सारे मस से चले गए, right? Ulcer, burning urination, so ulcer complete name is ulceritis, right? फिर वो peptic बन जाता है, peptic ulcer, burning urination, tuberculosis, low blood pressure। Low blood pressure, it means heart is weak, right? Heart is weak, तो heart करने के लिए you have to increase your nitric oxide, simple। Dengue, chicken pox। Now chicken pox, इसका there is no इलाज, I would say, I'm not saying कि natural इलाज है, but how you can थोड़ा सा relief कैसे मिल सकता है। तो chicken pox जितना early age में it comes, better। First 7 days it will come, then 7 days it will dry, then 7 days it will remove from your body, and 7 days it will heal। So it's like 28 days, वो पूरा एक महीना गया आपका, right? And do not touch it, वो फिर गड्ढे से हो जाएंगे स्किन में। High blood pressure, सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बताया था, आई टोल्ड यू। एंड लास्ट इज थायराइडाइटिस। सो दिस 58 you have some more backup plan, otherwise everything will be taken care by the CPS, right? So this is it। So if till here everything is clear to you, just like AC, cool। So it's 9 o'clock, चलेगा अगर मैं ब्रेक ना लूं, because we are running short। If I don't take break, will it work, or should I take a 5-minute break? Just tell me, should I take a break or not? 5 minutes, okay, let's take a 5-minute break, right? So I'll be back in 5 minutes। Hi, I'm back। If I'm audible and visible to you, please type yes। Amazing, right? So let me see, share the screen again। Can you see the screen? The bonus 29, the Ayurveda remedies, right? You can see the screen, right? Just type yes। Okay, very nice। So this is a one page example I'll give, one page remedy I'll give you। The Ayurveda remedies, just see quickly। Although after making it, I thought थोड़ा congested हो गया, but sorry for that। Next time I'll just fix it in 2 or 3 pages। So what you need to understand over here is that evidence based natural herb remedies, in this chart consumption amount is measured in scoop। 1 scoop is equal to 1/8 of tablespoon, right? Or 2 grams, right? Oh, sorry, 0.2 grams or 1/8 of the gram, something like that, right? So if I talk about cold, right? So what you need to do, cold may boil 2 scoops of tulsi, 1 scoop each of ginger plus cinnamon plus black pepper in 100 milliliter water for 5 minutes, sip it while warm, repeat 4 times a day। This is for cold। Cough, now see the third one, blood thinner। Now one of my student or patient, you can say, she's 73 years of age, Mrs. Kiran Wadhwa, and his son has followed my system, lost 12 kg। So she was diagnosed with
उनकी एंजियोग्राफी हो गई थी, मतलब एंजियोग्राफी हुई थी एंड द ब्लॉकेज वाज 100 एंड शी वाज जस्ट सजेस्टेड, मैंने आपको वो शायद सेंड को एग्जांपल, आई शो यू दैट एग्जांपल. Sunday, the first time we met. So she was advised for, her family was advised for कि भाई you have to go for the bypass. Bypass is a very complicated system, you know that. So you know in Agra, you know offline there are a lot of people are following this right, so they know me and they you know just talking कि यार वो this time I'm just 30 right, so यार वो विशाल भी follow कर लो bypass से बच्चों. So eventually they decided कि we will go for naturopathy. ठीक है, so they said okay, they rejected these, they came back. And she lost in 4 months, she lost almost 15 kgs and all her medicine was tapered, but I gave her natural blood thinner. Now this blood thinner is already published in this Ayurveda का भी journals होता है ना, this all not all are medical journals, allopathy journal, Ayurveda के भी हैं, naturopathy के भी हैं. So what is that? Boil 2 scoops of ginger with 1 scoop each of garlic plus turmeric in 100 milliliter water for 5 minutes. Sip while warm. Take once a day after dinner. सोचो कितना strong blood thinner है. दिस ब्लड थिनर, नेचुरल ब्लड थिनर, जो इफेक्ट है वो मैन मेड ब्लड थिनर जैसा है, उससे बेटर ही है, विद नो साइड इफेक्ट, राइट. तो सिमिलरली देखो कितना कुछ है. लास्ट में आपको जो आई वांट टू शो यू समथिंग, दैट इज टूथ पाउडर, हेड वॉश, फेस वॉश, ये इंपॉर्टेंट चीज है. आप अपना नेचुरल यू कैन मेक इट. एंड हार्ट अटैक, यू नो आई विल गिव यू द रेफरेंस. हार्ट अटैक में जस्ट सी व्हाट इज रिटन, for an individual who is still conscious during a heart attack, give them warm water mixed with teaspoon with a teaspoonful of cane pepper, lal mirch. For an unconscious person, cane extract would be most suitable. A few drops of the extract under the tongue would suffice. Right? So this is in their medical journals, Ayurveda journals. कि हार्ट अटैक में आपको ये देना है, वो ब्लड थिनर वो हो गया, ठीक है. ऐसी फीवर, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इंडाइजेशन, नॉजिया, जॉइंट पेन, डायरिया with CTS, right? What extra you can, right? Now see next, the English and botanical names. Amla, gooseberry. What is a botanical name? It is a fruit. ऐसी some is resin, stem, seeds, stem bark, fruit, seeds, leaves, stem bark, bulb, right? So these are the things you have to understand. Then the KJ therapy active ingredient reference manual. Reference manual, I have given you the references of those manuals, कहाँ ये publish हुआ है, right? So everything is evidence based, right? So this, if you are someone who are yourself a coach, you can use this slide. You know, I won't be giving you doing any objection. This is for the purpose of making people healthy, right? So 26 हो गए यहाँ पे, right? So 26 reference manuals for Ayurveda is over here in front of you. So when you have the things to download, just watch it. Now the orientation program. Now let's see whether this naturopathy is for you or not, or you need some more time to revision or something like that, right? So do you want to know this naturopathy is for you or not? Just type yes. Yeah. Cool. So it's an orientation program. This is your first in college students, right? So something like that. कि अब क्या होने वाला है आगे देखते हैं ये वो, right? So similarly, I'll ask 5 questions to you. I'll ask 5 questions to you. Quickly read. You know, what is the purpose of your life? What are the 5 to 10 takeaways from the naturopathy healing system? Naturopathy. This is your to-do program. I'll give you challenges. Main thing is over here. Just read these 5 questions. The first one is write down the name of your diseases. Just मन में सोचो आपके what are the diseases you have. Now then 5 questions. In these 5 questions, if you have 4 yes or 5 yes, it means you are good to go. If you have 1 yes, 2 yes or 3 yeses, it means you need a revision. I'm not saying this program is not for you. I think you need more revision. Just tell me how many yeses are there. 3, 4, 5, whatever yeses is there. You have the numbers 3, 4, 5, whatever your answer is, just type the number of yeses. Quickly. Question 1, question 2, question 3, question 4, question 5 in your screen.
Just self-analysis. This is just self-analysis, right? So 4, good to go, Yuvraj. More. I'll move forward. 0 to me because I'm not suffering from anything. It's okay, Dharni, right? So if you're convinced, then it's good to go. 3 yes and 2 no's, good to go, Radhika. Or you need to more. I mean, you need more. Revisions. Dinesh 4, awesome. 4. Okay, 5, awesome. Right. Cool. So no worries. Those who have less yeses, just don't worry because by the time we reach day 5, you'll be more convinced, right? So आगे चलते हैं. Now cosmic healing. Now 5. There are a lot of 5s also, right? Cool. So now let's talk about cosmic healing. Now understand what is cosmic healing. I had a student. She was in her 30s, 37, 38, married, 2 children. She did that. If somebody can do 200%, she was doing 500%. I would say, so dedicated. But the results were coming 20%, 30%. I was not convinced. I was getting frustrated. ये कैसे हो सकता है? Because people who do it, वो पता चल जाता है. Those vibes are there. Somebody who's doing, those vibes are there. I just connect with them. Those who are following it. But she was not getting the result. So when I started talking to her, I realized that she was not in a very good relationship with her in-laws. Her husband was not in talking terms with her properly, maybe scolding a lot of times. And her kids were also very not supportive, or they were young kids but not very supportive or stuff like that. So she was mentally, she was not okay. So years back, 4-5 years back, I did some mindfulness sessions with some top guys from the industry. So I wanted to do something for her. So what I did, I asked her to write down some, affirmations. Please write these affirmations and let's do it, right? So do you want to see those affirmations? Yes, just type cool yes, right? So those affirmations has changed her life actually. Yeah, awesome. So here it is. These are 36 affirmations. Quickly read it and I'll tell you what you have to do. Quickly read it, and I am opening the chats in the Telegram group. You have to write down your 2 best affirmations, right? I'm saying this something psychological with you, and it's very important. By the time you read, I'll open the chats, and I want you to write 2 affirmations, 2 best affirmations. Everyone, I'm noting down, right? Affirmation, send message, okay. 1 to 36, quickly read down, and I want you to write your best 2 affirmations. I have switched on the Telegram group, and just type your 2 best quotations, affirmations. How you have to bring it to your life, it is the second part. I'll tell you. First, you decide your 2 best affirmations, then I'll tell you what to do next. I'm waiting in your Telegram group. People who are watching on recording, you can quickly go a little forward. If I'm taking long over here, I'll just take 2-3 minutes, and you can also note down your 2 best affirmations, right? Please note down somewhere. So Dharni is writing, I choose to be healthy. I celebrate life every day. Very good. You're asking, my gratitude for health brings more health. Awesome. Number 9, every day is. Neha is writing, every day is a new day full of health, vitality, happiness. I celebrate life every day. Amazing, right? And you guys also write over here. Those who have already written over, just write one more line. I am cleaning my endothelium layer. Just write it. Just write it. Those who have written, just write the second line. I am cleaning my
endothelium layer. Mm-hmm. Harni, Yuvraj, Neha, just write, because you have written over here, I am cleaning my endothelium layer. Awesome. Right? Just do it as I say. Please do it. Yesh has written, the universe is blessing me with good health. I am blessed with an abundance of it. Awesome. Right? Please also write, after writing 2 affirmations, I am cleaning my endothelium layer. Quickly, quickly, quickly. All the newcomers, come on, do it, do it, do it. Amazing. Right? And the last thing I'm asking you to write, please write, don't write I am quitting, right? I have quit MRP. That's it. Let's start. I have quit MRP. So 2 affirmations, I am cleaning my endothelium layer, and last, I have quit MRP. Amazing. Just send those signals to your brain, right? Just send those signals to your brain. Just last 30 seconds, hurry up. Now, remember 3 numbers. Those number is 3, 6, 9. Right? Those number is 3, 6, 9. Fast, fast, fast. Last 15 seconds. Okay. Done. Everybody done? I'm just switch off the chat. Now you have to just remember, focus on 3 words, that is 3 numbers, that is 3, 6, 9. Now you got 3, 6, 9. You add all the 3 numbers, 3 plus 6 is 9, 9 plus 9 is 18. Now you add 1 and 8, 18, 1 and 8, it is 9. Now if you keep dividing 9, it's 4.5. 4 or 5 is 9. Then you again keep dividing it, the number is always going to be. Now this is the secret of abundance. Similarly, the science says, the mindfulness science says, that if you focus on anything for, let's say, 15 to 18 seconds, that things actually start coming in your life. So what you have to do, just make this kind of notebook, 10 to 15 rupees notebook, you purchase it, or a diary if you want. In morning, you have to write the 3 affirmations on day 1. The first, second, third. Just 1, 2, 3, 3 lines. First line, first affirmation, second, third. That's it. In afternoon, just write 6 affirmations, the green ones. Right? Day 1, green ones. This is 6 affirmations. And in night, before sleeping, just do it this 9 affirmations from 10 to 18. Trust me, your life will get changed. Next 30 days, you will see what is happening. Right? So this is your day 1, then day 2. Then day 1, day 2. Every day you have to alternatively write different affirmations. Trust me, this is the best thing to do. Right? So will you be able to do it? Just type yes. Then I'll show you what is the next thing you have to do. Yeah, just start it. Just start it, right? If you want to have a screenshot, because I'll be giving you this on day 6, just start doing it. Right? Now the next thing is that goal cards. What you have to do, just print out it. I'll give you the PDF, PNG and PDF form. Just go to any cyber cafe or something like that and just take out print out. है ना? वो बिल्कुल business card की shape में निकल के आएगा. I have designed in such a way. And behind this, goal card, you have to write down your affirmations. Right? I have my goal card over here. Right? I have my goal card. It's always in my purse. So here it is. I'm Vishal Saini. I am on a mission to help 100,000 people to live a happy, healthy, prosperous life. Right? So every time I take out this goal card, it's always written on the back side. नजर में आता रहता है. So here I'm talking about health. Right? Here I'm talking about health. So this should be your goal card. I'm going to give you some task also. So this you have to do it. Once you get these things to download it, just simply do it, and then make 2 baje aapko dekna. Right? If you think that this is going to help you out, just type MS. Right? This is something my students tell me, sir, some magic is happening.
जब आप बोल रहे थे हमें थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार ये कौन ड्रामे करेगा इस टाइप से, द सेम ही, एंड ट्रस्ट मी कि सर वाकई में मतलब दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस्टेस्ट थिंग वी आर डूइंग, राइट? मतलब आपको करना ही है। In 2015 or 16, I took those classes of mindfulness, and I did not take any action. And out of the blues, I just first time I applied on my student, that lady, she was suffering, and her in-laws have started loving her. Children are starting loving her. Her husband is now dying on her. Things get changed, right? Simple. Yeah, subconscious science, secret, whatever you want to say, right? Now this is the part. After I had an endotherapy, is the thing I keep enjoying. This is the thing I'm crazy for. You know, now you are going to enter in my academy, the Go Nature Academy. You know, offline classes. You know, there's a 7 days classes, and I charge 25,000 rupees. I'm going to give you in a very compact way in this bonus. This is my favorite part, right? So if you want to enter over here, just type BIO, bring it on. Yeah. I told I'll make things so much easy for you. Even if I don't give you the printout material, you will be able to learn it. Right? You will be able to learn it. Now, the science behind this academy is that make things simplified. Right? I'll give you an example from where it came to my mind to make things simplified. Like I was a cricketer. I know an incident. I was playing under 17 Punjab. I used to play for Chandigarh. 10 ओवर में 10 overs 100 runs needed. 10 overs 100 runs needed. Just see the science of simplification, how I try to make things easy. Just learn from my cricket coaches. Now 10 overs 100 runs, it sounds very big task, right? But my coach, in that drink break, he said, Vishal, 10 over सोचेगा और 100 run सोचेगा बहुत ज़्यादा है. Just think 60 balls 100 runs, right? What the difference is? Now he said, in every over, Vishal, you are going to get one loose ball. 10 over में 10 loose ball मिलेगा, वहाँ से मिलेगा. Can you both convert those loose ball into a boundary? Because yes sir, we can do. So it means 10 over 10 loose balls, 10 chokkas, not chakkas. So mean 40 run आ गए. We grabbed 40 runs in 10 balls. Now what is the task left? In 50 balls, just 60 runs left. Now how have to manage? Vishal single double लेना बस. Make sense what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है? 10 balls 10 over 100 बहुत tough लग रहा था. When we simplified it, हर over में I'll get a loose ball. I'll try to go for a boundary. So it means 10 over 10 loose balls, 10 chokkas. So 10 into 4 is 40. It means 10 balls में मैंने 40 run बना दिए. कितना बचा? In 50 balls, 60 runs needed, and it is easily achievable by single double. Right? Simple. The same way, your health should be simplified. Right? So you need to understand one word, and that is a new word I'm going to tell you. Do you know what is a fast bowler also called? Like we have spinners, batsmen, bowlers, wicket keepers, even umpire on the field. So fast bowler is also called as pacer. Yes, pace. Yuvraj did pace. Pacer. So P-A-C-E-R. Now what I have done, I've changed the name of this. I've changed the spelling a little bit. It's not P-A-C-E-R. It's P-A-C-C-E-R. Right? So please type P-A-C-C-E-R. Yes, swinger भी बोलते हैं, seamer भी बोलते हैं. So pacer. P-A-C-C-E-R. Everybody write, please. It's so important. Everybody, whoever, even old students, just write it again. P-A-C-C-E-R. Pacer. Right? P-A-C-C-E-R. Not T-R. जिसने गलत लिखा है, write it again. P-A-C-C-E-R. Pacer. Right? Now pacer. Now the three more alphabets is D-B-P. D-B-P stands for doing bowling practice. Pacer, doing bowling practice. So the entire word is pacer, DBP, no gap. Now type this entire word again, then I'll move forward. Pacer, P-A-C-C-E-R, DBP. DBP means doing bowling practice. Yeah. Pacers, P-A-C-C-E-R-S, pacers. Pacers. Sorry, मैं ऐसा बताना भूल गया था. Pacers. P-A-C-C-R-S, D-B-P. Yes, awesome. Now let's make it things simple, right? Now see the next image, what it is. ये तो क्लास रिकॉर्डेड है. बच्चे रख. तू निकाल क्यों दिया?
चल जहाँ पे होता है मैं नहीं निकाला P stands for power. रिकॉर्ड हो रहा है ना ये देख Avoid. So four things that will give you power. Four things नहीं you need चल to रहा है देख avoid कर in your कर कर life. कर Four things that will give you a lot of लगा freedom. इसमें Four ए challenges. लगा इसमें Four things that will give you energy. Routine में क्या करना है 4 चीजें. Four things अरे you need to हटो strive ये for. बाद में देखेंगे Four इसको things फिर to detox. That will give you boost your energy. And four things about precautions. Right? So till here, what the message I'm going to give you, it is clear to you. Just type yes. Yeah, everybody has written PACES DBP, right? Cool. Now, first focus on the first four things that we need to avoid, right? So it is like this. Sorry, power, not avoid. First is power. P for power, right? So the first four things that will give us power. Sprouts, very important. B12, right? Protein, and all the energy. Lot of things you will get from sprouts, right? Second is nuts. All the nuts which you are eating. Third is bladder. First 30 days you have to do the nose breathing, then eventually will come on the bladder, mouth breathing. Fourth is urine stop and flow and Kegel exercise. Now this is the most powerful cheese you can do for an internal healing and internal power. So every one of us are going for urine on an average 5 to 10 times in a day. 10 is also okay, 5 is also okay, 3 is also okay. Whenever you are going for urine, just make it a habit. You will not do the urine in one flow, right? 5 breaks. Urine nikala, stop it. Then urine kiya, stop it. Urine kiya, stop it. 5 minimum. So there is no exercise of the nerves, your urinary tract. There is no exercise. The only exercise is if you do this. Male impotency ठीक हो जाएगी with diet and this. Something is like that, right? Want to improve your performance, things like that. I mean, आप कहोगे मैं तो सुपरमैन बन गया हूँ, right? Second is Kegel exercise. Now, pelvic floor muscles. What is your pelvic floor muscles? Now, this is your navi. This navi and this lower portion till back, where you have your colon. This comes under your pelvic region. Now, focus on your colon. Focus on your colon from where you are excreting. That colon, just squeeze it inside for 1 second. Do it. Squeeze inside, colon, release. Squeeze, release. Squeeze, release. Squeeze, release. Squeeze, release. Right? Anytime, any place, anywhere, driving, sitting, lying, sleeping, whatever you want to do, just do it. आपको बता नहीं सकता हूँ. I've treated so many patients who were, urinary tract infection, male impotency, right? Lack of interest in sex, something like that. And ये amazing चीज़ आपको करनी है. Even if you're not have any disease, just do it. One of my student, what he did, उसने अपने bathroom में washroom में भूल जाता था, उसने चिपकाया ऐसे करके urine stop and flow, right? So कहता है और अपने office में भी has done it. And this Kegel exercise for 1 second. Now do it for 5 seconds. Just do it. 1, 2, 3, 4, 5. Release it. Right? So slowly, when you will become, you will have the best benefits after 7 days, 7 weeks. तो जब आप अपने इसको स्क्वीज करोगे, अपने कोलॉन को, अपने एनस को, तो स्ट्रेच आएगा यहाँ पीठ तक. यहाँ पीठ तक अभी तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ तक स्ट्रेच आ रहा है. Slowly यहाँ तक स्ट्रेच आएगा. So have you ever seen a horse doing urine? Horse, male horse, female horse, क्या बोलते हैं उसको? Male बोलते हैं. तो थोड़ा सा then release, थोड़ा सा then release, and they are so powerful. If you want that kind of powerful male, female, just do it, right? So if these 4 points are clear to you, just type MS. Just type MS. Yeah. आपको मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए ये क्या चीज है, ये क्या है. आप इसको मतलब मैं आपको बता नहीं सकता. जितने भी ये सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं उनको ये सब ये डीप में बताते हैं ये सब चीजें, बट दिस इज समथिंग फ्री आपको करना है, राइट? Cool. Now the next thing is after power, after 4 power provider. Now see the logo, green hari batti, power ki light, right? Now the next is 4 things to avoid. MRP, ये तो आप convinced हो. Late night wake-ups. 11 PM is last. 11 PM is last. कभी कब चलता है कुछ हो गया, but 11 PM is last, right? Now the third is cooked food for sometimes. And what I'm saying?
people with piles all can do Kegels. Yes, if you are comfortable, there is no pain, कुछ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल कीजिए. And piles from coming on this diet, वो ठीक ही होगा, वो ठीक ही होना है. Kegel how many times? There is no limit. 100, 2000, 10,000 वो करते रहो बैठे बैठे, right? And if there are some, because we live in a very distracted world, yeah? Very distracted world. Like there are sometimes unnecessary arousal of desire. So if you want to control that desires, then again start doing this. So वो आपको mind भी distract कर रहा है, right? ब्रह्मचारी लोग करते हैं इसको. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ब्रह्मचारी बन जाओ, but you will have a very control on yourself, good control on yourself, right? हाँ. तो cooked food for sometimes 2 months मैं बोल रहा हूँ, then after that you decide. फिर भी मैं बोल रहा हूँ बीच में if you have some craving, वो guarantee में आपके पास दाल का बोल है, सब्जी का बोल है, 1 कटोरी 2 कटोरी ले लिया, फिर plate 1 पहले सैलेड आगे वो ले लिया, something like that. But जितना, because this is the foundation, first 60 days is the foundation, right? Alcohol, tobacco, anything that is unhealthy, you have to avoid these things, right? So if this 4 thing is clear to you, just type AC. Just type AC. Let me fill my bottle. Glass with water. Now, the next 4 things is 4 things to cleaner. Now see the झाड़ू देखो clean करता है, right? मैंने पिछले लोगों को क्या था? ये circle में this is your दायरा, this is your region. Nothing will come inside that is related to these things, right? Now the next is झाड़ू, clean, flaxseed. It will broaden your blood vessels, right? Cleaning ही तो हो रही है. Now see the thing, see the magic. Now your blood vessels are opening और पीछे से ये आ रहा है और पीछे से ये आ रहा है, right? X. Getting my point, right? So फिर वो sunlight भी है. Disease is an impossibility. Disease is an impossibility, my friends. बस you have to understand what I'm trying to say. So this flaxseed हो गया. उसके जब morning में उठ रहे हो, see there are 4 things to drink. Normal water, lemon, right? Lemon peel juice. अब वो नींबू निचोड़ के we throw the छिलका, right? If you collect the छिलका and put it in the mixie and put some water and mixie up, you run करेंगे, वो एक इतना hard होता है कि mixie even cannot convert into liquid. It is so thick, right? It is we give this to cancer patients also. Not me, because my mentors. Lemon peel juice. Lemon peel juice उसको फिर मिक्सी में करके it will be bitter and खट्टा, वो पीना है. Alkaline water, just before sleeping at night, take a glass of water, or there are alkaline bottles coming कांच की, उसमें cut खीरा and put it, 1 नींबू, cut 4 pieces and put it, 4-5 gram ginger, cut into pieces and put it, coriander leaves and mint leaves, right? डाल के रख दीजिए, morning में you drink it. ठीक है. अब उसका जो नींबू होगा वो एकदम लूज हो गया होगा, तो you can use it as a peel water. So now eventually what I'm saying, you have 4 things to drink. Simple water with lemon. उसके बाद फिर वो lemon को उसमें peel मिक्सी में करके वो, और alkaline water. Any one or any 2 you will do, right? Water, पूरे दिन में जो हमें पीना है water, your weight into for every 10 kg 1 glass. So 60 kg 6 to 12 glass. So 80 kg 8 to 16 glass. So water that would be TDS. And kanji. The moment you will start drinking kanji, how many of you have searched about kanji on YouTube? नहीं, सुलगना क्रोन्स के लिए नहीं है. क्रोन्स के लिए बस वही सब चीजें हैं. आप सिर्फ सिंपल पानी पियोगे मॉर्निंग में, या जीरा वाटर और अजवाइन वाटर, राइट? या तो कांजी, you have to search kanji and it is the most bestest thing. ये 3 दिन में बनती है. It is a medicine for your gut microbiota. मॉर्निंग में पीनी है. कभी मॉर्निंग में नहीं, दिन में कभी भी पी सकते हैं. मैंने आज दिन में 3 बार ही पिया और इतना अच्छा फ्रेश हूँ, लाइक कैनॉट टेल, राइट? नहीं, पॉरेज नहीं होता है कांजी इज अ लिक्विड, बिल्कुल पानी जैसा पतला होगा. ओनली थिंग इज यू हैव पुट सम सॉल्ट, यू हैव पुट सम राइस सीड्स, यू हैव पुट बीटरूट और कैरेट, और मे बी बोथ, राइट? अल्टीमेट चीज फॉर योर B12, अल्टीमेट चीज फॉर योर क्लीनिंग, अल्टीमेट चीज फॉर योर digestion, right? So this part is clear. Type AC, right? Just type AC. Cool. Everybody clear the energy. Amazing, right? Everybody please type it, right? Please keep your fingers on the on your keyboard. Flaxseed भी मत लेना अभी, सुलगना. अभी just जो मैंने 5 चीजें बताई हैं,
your life is either you suffer your entire life because 70 years, almost 70 years अभी आपको और जीना है. Either you suffer it or very simple थोड़ा सा तपस्या करके 7-8 months कर लो and I am with you and I will keep updating you if you know what else can be added. But start your journey with this 5-6 things which I have told you. Right? Now, cool. And you seem to be a very tough girl, you know. You're a fire. Fire are very tough. You're fire, you know. Challenges to accept. Now challenge जो पढ़ने में ठीक से नहीं लग रहा है. Do revision self. मतलब जो मैं आपको notes दूंगा, you have to read those notes again, right? उसको print out करा के उसको आप read करेंगे. नहीं भी कराना चलेगा. With me also means अब next batch आएगा अगले संडे को. आ जाना लाइव. बैठ जाना यहाँ पे. रिवीजन हो जाएगा आपका. ठीक है ना? मिस हो गया तो नेक्स्ट 3 बैचेस में आ जाओ आप. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो चौथे पांचवें बैच में भी आ जाते हैं. मेरे पास यहाँ स्पेस होती है, मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग. राइट? मेंटेन वीकली प्लानर. ये चैलेंज है. वो वीकली प्लानर आपको भी आज कितना फास्ट किया, कितना वॉक किया, हाउ मच आई टेक वाटर, दिस इज अ चैलेंज. राइट? I have hepatitis, can I take kanji? I am not on medicine. Yes, you can take. If you feel that there is some uncomfortable, just drop it. एक दो बारी लेके तो देखो. Right? So पहला रिवीजन हो गया चैलेंज. दूसरा you have to maintain weekly planner. Third is 5 AM club and bath. सुबह 5 बजे if you can wake up and take cold water shower. Cold water से मतलब है नॉर्मल जो नलके का पानी आ रहा था उससे. Now don't put it in your head. First put it on your feet. Then your calf, knees, thighs, stomach, chest, shoulders, neck. Then कितना मैंने बोलने में टाइम लग रहा है 10 seconds. Right? Never on your head. And please don't bath with hot water. This is the worst thing you can do for your eyes. Bathing with hot water. Maybe you are living in a place where it is very cold. नहीं रहे वैसे ही ठंड है तो very normal lukewarm water and वही नीचे से ऊपर आना है. Right? And last medicine tapering and take energy test. अगर आपने energy test नहीं लिया, I am giving you a very warning ही समझ लो, आपको warning दे रहा हूँ कि आज कल कर लेना अगर नहीं किया. आप बहुत पीछे रह जाओगे अगर आपने वो नहीं किया, क्योंकि आपके पास वो होगा नहीं, एक सबूत नहीं होगा कि भाई मैं कितना फिट था, हाउ मच आई हैव इंप्रूव्ड. राइट? अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप यू विल सी कि या शुड आई टेक माय मेडिसिन और नॉट, बट वो 99% यू विल बी कन्विंस्ड इफ यू सी कि यार मैंने स्टार्टेड दिस नेचुरोपैथी जर्नी, माय स्टेयर वाज 60 एंड आफ्टर 7 days और आफ्टर 14 days माय स्टेयर इज 300. भाई मैं कहां से बीमार हूं? हटाओ मेडिसिन को, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर. राइट? So getting my point, just type MS if it is clear. Huh? Cool. Please everybody type MS. अब लास्ट स्लॉग ओवर चल रहे हैं, हमने चौके छक्के मारने हैं, तो जरा आप भी तालियां ज्यादा बजाओ तो और एनर्जी आएगी. राइट? नाउ नेक्स्ट 4 के बाद टाइम हो गया, कवर इसको आज कवर करते हैं. राइट? 4 एनर्जी प्रोवाइडर. एनर्जी, नाउ सी द लोगो, सनलाइट, क्लीन रॉ ईटिंग फॉर एंडोथेलियम लेयर. नाउ जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहे हो उसको सूरज से ही वो पूरा क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस वाले पूरी केमिस्ट्री है वो सारी मिलती है. 2% जो 2% फ्रूट्स खा रहे हो. 6 to 8 hours of sleep. Now sleep का ग्रुप से क्या लेना है? डायरेक्शन से लेना है. So whenever you are sleeping, try to sleep. Your head should be in east or north, south, east or south. Why? Earth has east, north, north, south, east, west. Similarly, your body, this is your head is north and your feet is south. So if this is north, you put it on the north side. So north, force of repulsion, force of repulsion, bad dreams, sperm ejaculation, things like that, and BP high, pulse high, heart problem, feeling lethargic, because you are against the energy you are sleeping. Right? South pole, north pole, those energy magnitude, you are sleeping against that, you know. Now what you should do best, you sleep in the south. So your north and earth south, force of attraction. Small kids growing height, make them sleep in south, you know, they will have good height. East is neutral. East is neutral. No force of attraction, no force of repulsion. So brahmacharis people, they sleep in east. I also sometimes sleep in east. You know, and my astrologer said, you know, one of the family astrologer said, Vishal, for you, west is good, as per my date of birth. So this is a science. But I said, sir, my students, they don't know, you know, what is, they know nothing. For what should I tell them? कि उनके लिए best क्या है? So he made me understand this concept. So he says east or south, right? So this is the point. Sunlight and sun gazing, right?
If you are someone who is very busy, भाई 15 मिनट का तो लेना ही है. It is so important. आपके खाना आ जाए बिल क्लिंटन के खेतों का, but if vitamin D is not in your cells, there is no use. There is no use, right? And sun gazing if possible, right? If this part is clear, just type MS. Cool. Now moving forward, routine work. Now routine work, Indian toilet, right? I gave you that example. Stool रखा, उस पे पैर रख लिए. ये just do it tomorrow. Just keep it in your washroom. Or if you have Indian toilet, start doing it. Hold on, हमें ऐसे नहीं रखना है, ऐसा रखना है, right? Alum, mouthwash and neem. It is routine. जहाँ पे आपका वॉश बेसिन है, जहाँ पे पूरी फैमिली के ब्रशेस पड़े होते हैं, वहाँ पे जाके एक नीम दातुन रख दो and एक put one alum. बात खत्म. Cosmic healing notes. 3 morning में, 6 afternoon में, 9 at night, right? And wheat grass juice and cumin. If this can be done regular, so something very awesome. Right? Now next, things to strive. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. Learn and do enema. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि enema kit right now you do order and just start doing from tomorrow. No, you will do some damage. First see on YouTube. I had no coach. I just learned on YouTube. मैंने कहा देखी जाएगी normal, very simple. But I'm saying do from YouTube, and I'm also saying you may find a coach near your city, a local naturopath or something, naturopathy center. Just go and do it. Girls from girls, boys from boys. Watch Gold Card every day. Right? Play one type of sports every day. Even that can be a badminton. Learn 4-5 kinds of asana, simple asanas, right? Then slowly move towards a tough one, Sheets asana, Mayur asana, right? These are the good ones, right? Headstand, things like that. But start from the basic, Bhujanga asana, this asana, the easy ones. Just start doing it. With flexibility lani hai. This part is clear. Just type AC. Yes, you can do this. I can do this, right? Which thing you are asking about, Sulagna? ऑल फोर. हाँ करो बिल्कुल. एनिमा करो. एनिमा तो करना ही तुम्हें. क्रॉन्स वालों को तो करना ही एनिमा. कोलकाट भी देखो, स्पोर्ट्स भी खेलो, आसन भी करो. नो प्रॉब्लम इन दैट. या राइट. नेक्स्ट, अभी मैंने इजी नहीं किया है. अभी तो टफ है सब चीजें. ये सब कौन याद करेगा? अभी तो मैं उसको और इजी करूंगा. राइट. नाउ थिंग्स टू डिटॉक्स. हर्बल टी डिटॉक्स करता है, क्लीनिंग करता है. 12 + 4 hours of fasting. Maybe you do IF intermittent fasting for 12 hours, और 12 + 4 पैटर्न 3 जो है, राइट? वो क्या कर रहे हैं? वो सारी आपकी डिटॉक्स ही तो कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, हीलिंग कर रहा है. Increase body heat by running. Sometimes some viruses, they are so stubborn, वो जिद्दी होते हैं, अंदर रह जाते हैं. तो they need more body heat. वो body बुखार बार-बार होगा नहीं, but they are inside your body. छोटा-मोटा immune system वो weak करेगा. Once in a week, I am someone who can go for running for every day. अभी रूटीन टूट गई है, but मेरा I make sure कि मैं हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन I go for a long running. You know, यहाँ पे घर के थोड़ा दूर यमुना घाट है, चारों तरफ खेत है, पहुंच जाओ वहाँ पे 4-5 किलोमीटर पे 10-12 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है. राइट. सो मेक श्योर यू डू रनिंग. घर में ट्रेडमिल है, मेक खिड़की विड़की ओपन है, दैट इज बेटर. अदरवाइज बाहर की रनिंग. रन ऑन योर टोज. और पहले हील पे भाग रहे हो, सड़क पे भाग रहे हो तो डैमेज हो जाएगा. ऐसे या तो पूरा बराबर रखो, या ऐसे करके ऐसे. कभी भी नॉट रन लाइक दिस. ऐसे ना हीलिंग हो, आपके घुटने खराब हो जाएंगे. एंड गुड स्पोर्ट शूज. डिजिटल डिटॉक्स. मोबाइल, वाईफाई, प्लीज स्विच इट ऑफ बिफोर स्लीप. यू नो दिस सैटेलाइट थिंग, वी आर just surrounded with this radiations and all, you know. If you see this whistleblowers, you can say these vibrations, they are actually controlling our human mind. There are a lot of whistleblowers, they are giving evidences. But what I'm saying, just stop this Wi-Fi बंद कर दो घर का, and नेट भी बंद कर दो सोने से पहले. ये बस ये छोटा सा काम करता है. If this part is clear, type AC. Right? Before this slide, कौन सा था before this slide? Okay. रूटीन वर्क. इंडियन टॉयलेट करो, एलम भी करो, कॉस्मिक हीलिंग भी करो. व्हीट ग्रास अभी मत लो आप, सिर्फ क्यूमिन जीरे का पानी पी सकते हो आप. ठीक है. ये स्ट्राइव आई हैव टोल्ड यू, डिटॉक्स वी हैव डन. नाउ 4 थिंग्स एज बूस्टर्स. पेसर्स, डीबीपी. सेकंड लास्ट पे आ गए हम. अर्थिंग, हींग लगे ना फिटकरी, कितनी एनर्जी आ रही है. एपिलेप्सी वाले तो जरूर करें, वो तो 2-2 किलोमीटर वॉक करें नंगे पांव. ठीक है. कोकोनट ऑयल. ठीक है. ये बूस्टर है. इट इज नेक्स्ट टू मदर्स मिल्क. जस्ट 1 टीस्पून. अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है मुंह में डालना, तो हल्का सा गुनगुना लूकवार्म वाटर घोलो और पी जाओ. फॉलो योर मेटाबॉलिक टाइम टेबल. याद है मेटाबॉलिक टाइम टेबल? 6 hours, एक्सेप्ट, एक्सक्रीट, वो सारा सिस्टम. राइट. 3 day इम्यून बूस्टर डाइट एवरी 45 days. ले लो, क्या जा रहा है? एवरी 60 days और 45 days. This will give you boost. Right? Making sense? Just type MS. Right? Just type MS. Cool. Amazing. Now coming forward. Now 4 things as precautions. Eat before you are hungry.
अपना 2% रेडी रखो भाई, नहीं रेडी है कोई पिज्जा आ जाएगा, मैगी आ जाएगी, खा जाओगे आप, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं भी तो शॉर्ट से गया, मैं भी तो I also started with this thing only, right? ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं, बट स्टमक थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, इसलिए कोकोनट ऑयल, नहीं तो ड्राई भी ले सकते हैं। टेक टाइम इन ईटिंग। नाउ 1.5 kg रोटी और 1.5 kg फ्रूट, उसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट, 70-75 ग्राम्स का आई टेक अ कैरेट, वो थोड़ा बड़ा था, उसको तोड़ के मैंने 75 ग्राम कर लिया। व्हाई? बिकॉज आई हैड अ क्रीम रोल ऑफ 75 ग्राम्स। क्रीम रोल क्या है? रिफाइंड फूड है, मैदा है, वो बीच में क्रीम डाल दी है। अब देखना ये था, इफ आई वांट टू ईट इट क्विकली, कौन सी चीज में क्विकली खा लूंगा? ट्रस्ट मी, वो 75 ग्राम्स का क्रीम रोल, इट वाज इन माय स्टमक इन 30 सेकंड्स। 30 seconds. And the same 35 grams of carrot took 2.5 minutes. Right? These are the real food. So when you will eat your 2%, don't get frustrated. वो starting में time लगेगा, कोई बात नहीं, habit बन जाएगी। और ये दुखता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन दुखेगा। Third, be prepared for withdrawal symptoms. Now what is withdrawal symptom? Those people who come on this raw diet, maybe, I'm not saying yes 100%, maybe on day 1, day 2 or day 3 you might have loose motion. Or that is not the loose motion virus wala, that is the cleaning part. You may feel very sleepy first 2-3 days. You may have some pain in your body. You may have running nose. You may have headache. Right? एक ये हो गया। एक see what the world is doing. हार्ट यहाँ से चीरते हैं, ओपन हार्ट में खोल के रख देते हैं, उसमें स्टंट डल रहा है, घुटने चेंज करा दो, यूट्रस काट के फेंक दो, ओवरीज निकाल दो, कोलोन काट दो, साइनस काट दो, किडनी निकाल दो, गॉल ब्लैडर निकाल दो। एक वो सब हो रहा है। एक ये हो सकता है ये 70-80% को, बिकॉज सी व्हाट इज योर एज, 20, 30, 40, 50, मे बी 60, राइट? व्हाट यू हैव डन फॉर लास्ट 20-50 इयर्स, यू आर टेकिंग अ यू टर्न। बॉडी के ऑर्गन्स के टेस्ट बड की कुछ मेमोरीज होती हैं, राइट? वो बुलाएंगी आप, वो सिम्टम्स दिखाएंगे। होल्ड योर हॉर्सेस, मैक्सिमम 3 days होगा, मैक्सिमम 4 days होगा, दैट्स इट, राइट? हो जाएगा। जस्ट टाइप आई कैन डू इट, just type I can do it. Please everyone create that energy. Yeah, simple. Now the most important thing, now if you are someone who want exact, भाई मुझे को तो सबूत चाहिए, हाँ मैं energetic feel कर रहा हूँ, मैं 100 से तो get your all blood work tested, especially for your problem. अब मैं बताऊंगा नहीं कि थायराइड वाले कौन से कराओ, बीपी वाले कौन से कराओ, डायबिटीज वाले कौन से, you know that. Apart from that, vitamin D, vitamin B12, calcium, sodium, potassium, ये सारे जो कराने सारे करा लो, so that your parents are also satisfied. Even if you go your blood test after 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, कि भाई ये पहले देख लो, अब देख लो, there is always improvement, right? हाँ, complete blood count, complete blood, जो कराना है आप कराओ, right? That is totally up to you, right? Makes sense? Just type MS. Just type MS. Cool. Now these are the 40 things. कौन याद रखेगा 40 चीजों को, right? So if you want me to make things very simple for you, right? Very simple to you, just type VBS. Very simple. Yeah, let's make it more simple. Amazing, awesome batch, right? So first see what are the 40 things I have told to you. कौन कौन याद करेगा ये 40 चीजें? कौन याद करेगा? These are the 40 things. 4 sprouts, 4 power, 4 avoid, then cleaning, then challenge, then energy, routine, strive, है ना, घर के इतने काम की, फिर डिटॉक्स, बूस्टर, प्रिकॉशंस, राइट? लेट्स मेक इट सिंपल। आई वांट यू टू फोकस ऑन जस्ट 50% थिंग्स। मैंने आपका आधा काम आसान कर दिया। मैं चाह रहा हूं कि आई एम गिविंग यू द टॉप 50% थिंग्स, half things are easy. Now what is the top 50 things? Just see the green slide. Just see the things in green. Just quickly read it. I want कि ये 50% चीजें तो आपको करनी ही करनी है, right? Just quickly read it. What is in green? Right? Sprouts. Right? If you have done reading, just type done. स्प्राउट्स नहीं लोगे आप, नट्स नहीं लोगे आप, ब्लैड करोगे आप, प्लीज टॉलरेट डाउन, सुलगना प्लीज राइट डाउन, है ना? यूरिन ब्लैड करोगे, यस, यूरिन स्टॉप लो करेंगे आप, अवॉइड एमआरपी, लेट नाइट वेकअप, है ना? ये सब चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी रुको, अभी वेट करो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। डन?
Now, try to understand the next slide which I'm going to show you. It is not an activity, it is not a task, it is your routine, right? Just see the next slide. Just see the blue ones. Now urine stop on flow. इसमें कुछ करना थोड़ी ना है. लेमन पील या एल्कलाइन वाटर और सिंपल वाटर जो सुगर पी रहे कुछ याद थोड़ा करना है. वाटर विद गुड TDS. बस एक बार you have to check it and call the TDS guy to settle your TDS. Right? Indian toilet क्या करना है? स्क्वेट वहां पे बस एक रखो स्टूल. एलम वॉश एंड नीम भाई वहीं ब्रश करने जा रहे हैं वहां पे पड़ा हुआ रखे रहने तो. Watch your bowl card. What a good. This is not a task. This is just a routine. Digital detox. Right, last three, take time in eating. This is the nature of the diet, right? You take time in eating. Alert withdrawal symptoms and blood work, right? Things made easy. Just type yes if it is getting easy for you. I'll make more easy in the next 2 slides. Yeah. Now, of course, there are some things which won't be able. Maybe you will not be able to do. So I have kept those things in red. I have kept those things in red. Now see, here it is, कांजी. Maybe you don't have those 3 days. नहीं है आपके पास उसको धूप में रखें फिर अंदर लेके आए. Weekly planner, okay. Maybe you won't be able to do it. Maybe आप 11-12 बजे सो रहे, you won't be able to eat 5 AM wake up. Sun gazing कर ही नहीं पाए. हम गुड़गांव में रहते हैं, वहाँ सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग हमारे घर के आगे. Cosmic healing notes, लेकिन नहीं बना पाए हम. Wheat grass, भाई हम जूस पी लें वही बहुत है. आप कह रहे हो wheat grass उगा के पियो, जीरा भी खाओ. जीरा फिर भी हो सकता है. Learn and start doing enema. This is a task. One type of sports. भाई हम वॉक करके ऑफिस चले जाएं, अब घर पे आ जाएं, सीधे चले, वही हमारे लिए स्पोर्ट्स हो जाता है. A lot of people who are busy, we have to be practical. ठीक है ना, मैं वो नहीं हूँ कि 7 दिन आपको जूस पे रहना है फिर डांट रहा हूँ. नहीं, these are things are not practical. lot of coaches are doing. Perform 4 types of asanas. भाई मैं बेड पे सीधा शीर्षासन में लेट जाता हूँ, मेरा बस वही एक आसन. मुझे आंसर्स मिले हैं सबको बताता हूँ. बॉडी हीट बाय एक्सरसाइज रनिंग नहीं हो सकती बहुत लोगों से. राइट, हटा दो. Right, makes sense to you? Making sense? If it is making sense, it is practical to you. Just type MSP. MSP means making sense and practical also. Yeah. Now, the most easiest thing I want to tell you. Out of this 40 things, just 10 things means 25% things. If you do it, you will be out of your diseases. Right? Read this fresh, powder वाला नहीं. So वो 25% जानने के लिए just type धूम मचा ले, because it is really I'm going to make a धूम, right? Just type धूम मचा ले. I want this entire धूम मचा ले. Yeah, I'll sip some 2-3 sips of water. Everybody, right? So these 40 things, and I'm going to tell you the first 25 things. Even if you do it, you will be out of your health issues. Right? So here it is. Just see the boxes. 10 things. Yeah? So 10 ओवर में 100 रन ज्यादा है, 60 बॉल में 100 रन कम है. हर ओवर में एक लूज बॉल मिलेगी, इसको चौके में कन्वर्ट करना है विशाल. It is much easier. Right? That's it, my friends. Right? Now, coming to Crohn's disease. So, Lagna, write it down because I want you to understand. Sprouts नहीं लेंगे आप, no. Nuts नहीं लेंगे आप, no. Flat करेंगे आप. Urine stop and flow कीगल करेंगे आप. Avoid MRP बिल्कुल करेंगे आप. नहीं मतलब नहीं लेंगे आप MRP. Late night wake up, of course. Cook food for sometimes नहीं लेंगे आप. Alcohol, tobacco, cigarette है ही नहीं. Flaxseed नहीं लेंगे आप. लेमन नहीं लेंगी, वाटर लेंगी मतलब मॉर्निंग में, वाटर विद गुड TDS. कांजी नहीं लेंगी आप, रिवीजन करेंगी आप. वीकली प्लानर मेंटेन कीजिए, जितना भी हो जाए, जो चीज़ ड्रॉप करने वाले इसमें डैश कर दीजिएगा. 5 AM वेकअप ये कर लो आप. राइट, 5 AM वेकअप ब्रह्ममुहूर्त कर लो. दिस इज समथिंग गुड. अगर नहीं है कुछ ऐसा है तो मत करिएगा, अदरवाइज करो आप ये, क्योंकि वैसे हमारी नहीं करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो जितना कर सकते हैं वो तो करें. मेडिसिन टेपर आप कह रही मैं कोई मेडिसिन खाती नहीं हूँ. एनर्जी टेस्ट करेंगे आप, एनर्जी टेस्ट करेंगे आप. 2-3% रॉ, बिल्कुल 2% खाइए, 3% खाइए, बट व्हाट यू हैव, जो भी मैंने आपको बताया. राइस इज लाइक समथिंग, कहीं आप ऑफिस जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, तो राइस में थोड़ा सा उसमें क्या किया, उसको पुलाव का रूप दे दिया. थोड़ा सा उसमें एशकोट डाल दिया, थोड़ा सा उसमें क्या डाल दिया, अपने ये डाल दिया अपना घिया, बॉटल गोल्ड. ठीक है,
थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा उसमें जीरा डाल दिया, जरा सा सी सॉल्ट या सेंधा नमक, एक दो थोड़ा सा पिंच ऑफ धनिया लीव्स, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे उसका, तो दैट्स इट। ठीक है, 6 से 8 आवर्स ऑफ स्लीप, सॉरी मेडिसिन टेबलेट रॉ हो गया, 6 से 8 घंटे सोना है, सनलाइट सन गेजिंग आप करो और कर सकती हो, इंडियन टॉयलेट, बाकी सब चीजें करनी है, एलम वॉश, नींद दातुन करो, कॉस्मेटिक नोट्स बनाओ, वीट ग्लास नहीं लोगे आप, जीरा खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है, एनिमा बिल्कुल करो आप, गोल्ड कार्ड करो, स्पोर्ट्स हो जाए तो बिल्कुल करो, आसन सिंपल सिंपल आसन, कोई भी 2 सिंपल आसन, हर्बल टी, आपके पास सौंफ की हर्बल, सॉरी सौंफ की ले लो थोड़ी सी, बिल्कुल सौंफ, जस्ट 2 ग्राम्स ऑफ सौंफ, उसका हर्बल टी ले लो, बाकी जीरा और अजवाइन, एक्सरसाइज, रनिंग, थोड़ा बहुत जितना आपसे हो पाए। ठीक है, मैसेज बीच में आ रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है। डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा, अर्थिंग बिल्कुल करो, कोकोनट वाटर भी मत लो, मिलेट्स मत लो, इम्यून बूस्टर मत करो, ईट बिफोर हंगर अगेन अप्लाइज फॉर एवरीवन, टेक टाइम इन ईटिंग रॉ, यस, आपका तो पपीता, ये खूब खाओ पपीता, खूब खाओ, राइट, अलर्ट विड्रॉल सिम्टम्स, ये सब कुछ सब चीजें नोट करने वाली है, ब्लड वर्क वगैरह, राइट, सो दिस इज इट, so we have completed, and from tomorrow is day 5, we'll be starting from here, right? So if there is any questions, please raise your hands. It's already I've taken almost 15 minutes extra, so if there is question, just quickly raise your hands, otherwise I'll take all the questions tomorrow. So Dinesh is raising hand. Dinesh, I have unmuted you. Yeah, try to unmute yourself. Yeah, as we spoke in one of the sessions, can you hear me? Yes, I can hear you, Dinesh. Hello? Yes, I can hear you. Yeah, in one of the sessions you spoke about the flow of, the food from mouth, stomach, pancreas, liver. Whatever is the alien thing that goes out. Mouth, stomach. Whatever is accepted by the body is kept inside. Mouth, stomach, intestine, liver. There are 10, 12 steps. I've just told you the 4 steps. Fine. So whatever is alien, that will be thrown out, which is not accepted by the body, which is not accepted by the liver, basically. So what I want to draw out about it, like I have been consuming this epilepsy tablet since last year, and I have the entire your voice is breaking. Anywhere a relation between that. I understand till I only understood till medicines which you are taking. After that, your voice was breaking. The medicine that I've been taking since last 12 years, what I have personally observed is, in my excreta, I find the same tablet as gold coming out. Yes. Is there any relation between this flow and the excreta, that the tablet coming out? The excreta is gold? Yes, that is something, your liver is not responding, your liver is, throwing away, because liver does not recognize these medicines. So it is biotransformations. So biotransformation is happening for those things which is alien to your body, which is man-made, right? But when you eat these medicines, it actually hampers your liver or kidney, then it goes to your body. Asar hoga, relief milega, but on the cost of your body organs, right? So similarly, things like refined food, packed food, they are not healthy for liver, but they are into your stomach, but they stays into your body and stays intact with the lining of the stomach. They create inflammation. But in your case, it's very much clear that liver is not accepting those medicines. और आपने कहा कि आपको वो feces में, आपके excrete में दिखा वो, तो it's simply वो liver ने उसको फेंक दिया बाहर. कभी कभार नहीं दिखता है, वो कहीं ना कहीं feces की बीच में फंसा रह गया है और वो नहीं दिखा. बाहर से सब feces था, अंदर कुछ था. But आपके केस में आपने उसको देख लिया. तो liver is not accepting it. So your only thing you have to do is कि when you come on this medicine tapering पे आपको ध्यान देना है, and just don't start immediately. Just start from 25%, right? 25% of like what? 25 on day 4 or on day 8 you will not eat medicine. On day 4 and day 8 and you will observe your energy. Means from day 1 आपने जो energy test किया है और वो जो day 7 पे energy test होगा उसमें improvement होना चाहिए, और वो आएगा, improvement आएगा. आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, आपने गलती से म्यूट कर दिया अपने आप को.
I cannot hear you. Okay, I'll come to you later. हाँ, आप बोलिए बोलिए. No, हाँ, just- बोलिए. Yeah. One more thing was like I have been consuming this tablet since last 12 years, Mhm. and since like there have been periods where 3-4 साल तक मेरे को कुछ हुआ नहीं है, Mhm. और बीच में मैंने छोड़ भी दिया था मेडिसिन वगैरह, और वापस कभी हुआ एक छोटे से चीज के लिए 30 साल में या 2 साल में एक बार होता है, and I have been consuming drugs round the clock, round the year since last 12 years. So like as you told, you can go and approach a homeopathy. I want to know if you know something. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. मैं ये कहूँगा कि when you will taper your medicine ना, तो medicine taper करने के बाद हमेशा अपने पास you keep a set of medicines. Maybe if there is some emergency, you should know कि अगर what are the emergency situations that you are facing, what are the symptoms, उसका एक medicines हमेशा रखना आप. If there is maybe you are traveling और अपने घर पे you always have those medicines. कि अगर कुछ हुआ तो मेरे पास ये मेडिसिन है. इवेंचुअली व्हाट वी वांट इज दैट कि हमारी मेडिसिन छूट जाए, हम लोग नॉर्मल आ जाए और हमारा ब्लड वर्क भी है वो भी नॉर्मल आ जाए, है ना. इवेंचुअली तो हमारा तो वही मोटिव है. तो बट उसके लिए मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि मेडिसिन का एक सेट, या कीप अ सेट ऑफ मेडिसिन ऑलवेज विद यू. well, आज नहीं. Yeah, that is always there with me. But if you can just help me with some good homeopathic doctor, not today, Okay. but anytime you come around. हाँ, I'll give you some I'll suggest you some names, right? Otherwise आप अपने शहर में Who's देखिए expert बाकी on this? Who's expert in this? एपिलेप्सी ना, Yeah. एपिलेप्सी. Yeah. Yeah. I'll try. Thank you. Thank you so much. Thank you. So I'll come to Dharni. She is raising her hand. Dharni, please unmute yourself. Then I'll come to Yuvraj. Then I'll take the questions that you will have written, right? Sure. Hi, Dharni. What's your take on vaccine? Sorry, What's your take on vaccine? vaccination. Yeah. See, I am not married and I don't have children right now. But you know, I will not go for vaccination for my children. I will follow Dr. N.K. Sharma, and there are a lot of good books on. I can share those links of those books. That vaccination. If I will say something about it, because I am not from the field of vaccination, so I have no right to say. I am saying what I will do with my children. No vaccination, no polio, DPR, nothing, right? And secondly, I'll share some videos of person who are from the field of vaccination. They are themselves saying that it's not required. In our age, you know, when we were vaccinated, it was polio, DPT, MMR. That's it. 2 or 3 vaccination. Right now, today, till the age of 12, 13, they said 52 injections. Not all 52. Like one is 5-in-1, 4-in-1, polio, DPT, MMR. They have a lot of mercury in it. And autism is one of the reasons what they are saying. So my take is that I cannot say anything what you should do or what you should do, but what I will do, I will not give vaccinations to my children. I'm convinced. For that, I'll share some videos in my Telegram channel, and please have some insights in that. And in coming days, I will try to share some books on vaccination. Yes, sir. And there's no B12, like there's no article or any research papers about B12, like There- about fermented foods and all. There might be a lot of researches. I'll also try to find out. You're talking about vitamin B12. Yes, sir. There's no research paper about that. Like we get the B12 by our normal things like fermented foods and all. Okay, I'll try to find out if I get any journal, medical journal, from a reputed medical journal. If I got some articles, so definitely I'll share. One more thing, you told insulin is secreted, like it's delayed. But what about insulin resistance then? See, what actually happens, it's all about spikes. ये जो spikes जब बनता है तो bolus basal, you know, या तो बहुत ज़्यादा बन जाता है आपका इंसुलिन या बहुत कम. So for example, आपने जैसे खाना खूब सारा खाया, so it's like Diwali. Your body is making a lot of glucose, so your body also need to make insulin, right? फिर अभी तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, है ना? अभी तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, but still my body is making insulin, but a very small quantity, right? So similarly, with people who are on medicines, या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है. तो या तो उनका glucose rise so much और वो बहुत hypoglycemic हो जाता है. So both the situations are high, and my only submission is that you cannot control it with medicines, right? You cannot control it with medicines. You need to come on the diet. Cool. So I'll come to
Yuvraj. Yuvraj, please unmute yourself. I've unmute you. Yuvraj, I can hear you. Please speak. I mean, you are mute. Please speak. Unmute. Please speak. Okay, I'll come to the chats now, right? I'll come to the chats. So immune booster I can take, sir. Sir, can we eat bananas in 1% diet? Yes, you can eat bananas. खूब सारे खाओ. अगर बनाना खाने से कोई मोटा होता तो सबसे पहले बंदर मोटे होते हैं, right? Sir, audio question. Okay, मैंने आपको unmute किया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. युवराज, I'll come again. खनक, flaxseed produces a lot of heat in the body. Can you give some insights on this? No, flaxseed का oil गर्म होता है, not flaxseed. I was eating 50 grams a day. अभी जाके मैंने 25 grams किया from last 7 years. Right? 3 महीने खाने के बाद I dropped for 2 weeks and again start eating. Flaxseed का तेल गर्म होता है. Flaxseed as a whole is never गर्म. Neha is asking first question: is salt in salads okay? Cause vegetables leave water when salt is added. उसमें आप क्या करो, जो vegetables है उसमें black salt डालो, उसमें सोडियम नहीं होता है टेस्ट के लिए, ठीक है. बाकी सब में अगर आपको कुछ खाना है तो सेंधा नमक और sea salt, right? And coconut sugar can we eat? कोकोनट शुगर क्या होता है? वो अंदर का जो व्हाइट पार्ट होता है वो कोकोनट शुगर. तो मैं फर्स्ट टाइम कुछ सुन रहा हूँ, कोकोनट शुगर या कोकोनट से बना हुआ कुछ मीठा, राइट? प्लीज आस्क, टेल मी व्हाट इज कोकोनट शुगर. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन सर? हाँ बिल्कुल पूछिए मृणालिनी, ऑफ कोर्स जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए. नवनाथ is saying, tell me about lipoma. Lipoma is like a hump in your body. It is an autoimmune disease. It is also because of this IGF, extra growth, है ना. तो उसमें डाइट आपको बहुत एटलीस्ट 9 months to 12 months यू हैव टू बी ऑन डाइट, ठीक है ना. कैन फिट्स पेशेंट्स गो डायरेक्टली मिलेट डाइट? नॉट डायरेक्टली, आफ्टर 21 days. After 21 days. Radhikam is asking, sir, my father has diagnosed angiography and it reported there one of the vein is pressed and no blockage, but they have started their BP tablets. Same process. First did heart mafia. You and your father, they will gain confidence like a superman कि भाई हमें तो हार्ट का कुछ खाना ही नहीं है. Then this diet, right? Because heart mafia will give you lot of clarity, and with that you can also read a book which is called Hospital से जिंदा कैसे लौटे, again by the same author Dr. Biswat Roy Chaudhary. These two books you read. Hospital से जिंदा कैसे लौटे, 99 rupees की बुक है, Amazon से ले लीजिए. And the second one is heart mafia. Then after, just you will read in one day, छोटी पतली किताब है. Then you come on this diet, right? Then you come on this diet. राइट. तो बीपी मेडिसिन जैसे मैंने आपको बताया वैसी टेपर होगी. एंड वो अगर हार्ट या एंजाइना पेन है वो 30 days में चले जाता है. कोई भी ब्लॉकेज होती है वो 2 से 3 months में बिल्कुल चली जाती है. लाइक यू नो इन केस ऑफ माय पेशेंट, हार्ट पेशेंट, राइट. सुलग्ना, ripen papaya I had once or twice but it caused indigestion for me so I left it. So I should eat boiled papaya or raw? रॉ ही खाना है. एंड इफ यू आर थिंकिंग बॉइल्ड फ्रूट तो बॉइल मत करना कोई भी, बट अगर आपको लग रहा है कि कच्चा पपीता है उसको बॉइल कर लो तो ज्यादा बेटर है. जो बॉइल अगर करोगे, आप दोनों एक्सपेरिमेंट्स करके देखो. इफ यू आर थिंकिंग कि रॉ पपाया से कुछ हो रहा है तो यू स्टार्ट विद लॉकी एंड एशवुड ओनली, ठीक है. थोड़ा सा फिर हीलिंग होना स्टार्ट होगी. आफ्टर 10-15 days यू इंट्रोड्यूस पपाया, देन सी हाउ इट इज गोइंग. इम्यून बूस्टर आई कांट टेक. नहीं, इम्यून बूस्टर नहीं करना है आपको, उसमें तो सारा सिट्रस है ना, सिट्रस, और उसमें से कोकोनट ले सकते हो आप, कोकोनट वाटर. यूरोज, माय स्लीप गेट्स इंटरप्टेड ड्यू टू यूरिनेशन इन बिटवीन रेमेडीज. फर्स्ट थिंग, सी अगर बहुत लेट नाइट पानी तो नहीं पी रहे हैं आप, ठीक है. अगर बहुत लेट नाइट पानी पी रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए, रात को नहीं पीना उसको, ठीक है. और इस डाइट पे आइए और थोड़ा रात का पानी कम कर दीजिए. मतलब अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, तो हैव वाटर टिल 8 PM, 8:30 PM. उसके बाद पानी मत पीजिए, ठीक है. और यूरिन करके सोइएगा. Why eat before hungry? Isn't it against nature? Even animals don't eat hunger. What I meant by eat before hunger means कि भूख लगने से पहले इसलिए खाना है. ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि खाने का आपका जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है. आप कुक्ड नहीं खा रहे हैं. कुक्ड खाना जो है, कुक्ड फूड है जो, वो बहुत टाइम तक स्टमक में रहता है, राइट. और वो आपको एक फीलिंगनेस देता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है. रॉ फूड वो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है. और जितना मर्जी खाना है आपको खाइए. इट इज नथिंग अगेंस्ट नेचर. इफ यू आर नॉट हंग्री यू वोंट बी ईट इट.
Yuvraj is asking, what's your opinion on oats described as superfood over markets? Oats is a wonderful food, but what we are eating, it is packed, it is refined. Fresh oats milna is a task. Agar fresh oats mil jaye to nothing like that. Please permit to unmute. Okay, Mrinalini, just give me a second. मैं questions ले लेता हूँ, फिर मैं आपको unmute करता हूँ. Sir, I'm extremely sorry I couldn't listen to the answer of my question. I had a connection problem. If you open, okay, Khanak, if you don't mind, can you please repeat both the answers? आपका question क्या था? एक तो उससे related था, sugar, coconut से related था. even दोबारा paste कर दीजिए, copy paste कर दीजिए अपना question. Neha is asking, it is available on Amazon. Coconut sugar brown in color. They say it's healthy. नहीं आप normal गुड़ खाओ, मीठे में खांड खाओ, देसी मिश्री, और आप उनकी website पे चले जाओ, खादर वाली की, वो पाम जैगरी देते हैं, पाम जैगरी मंगा लो, बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है. Dharani, with sprouts many experience heat, it seems. So what can be solution for this? With sprouts many experience heat, it seems. Dharani, sprouts के साथ heat तो नहीं आना चाहिए. आप वाटर सोक करने के बाद उसको एक बार स्टीम या थोड़ा सा बॉईल करके देखिए, फिर देखिए आता है कि नहीं आता है. यही. हार्पर इज आस्किंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिस्टर्ब स्लीप साइकिल. हार्पर, आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल करोगे. ब्रीदिंग जो मैंने बताया है वो आपको करना ही करना है, और ये 15 टाइम्स 20 टाइम, ठीक है. वॉलनट आपको दिन में 5 to 6 वॉलनट्स खाने हैं, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं. और ग्रीन टी पीने हैं आपको. ग्रीन टी एंड वॉलनट्स आर वेरी गुड फॉर ब्रेन, ठीक है. और अपना 2% खाना स्टार्ट करो, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाओ. प्रांजलि इज आस्किंग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बॉइल्ड फूड एंड कुक्ड फूड? बॉइल्ड में वाटर है और वो वाटर से हीट हो रहा है. कुक्ड में क्या है, वो उसमें वाटर नहीं है, वो हीट जो है डायरेक्ट, बस हीट और कढ़ाई की बीच की जो हीट है वो 120, 130, 150 डिग्री में चले गया है. वाटर कभी भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं जाता है, तो 50% एंजाइम्स मिल जाएंगे आपको. व्हाट अबाउट बेल जूस? बिल्कुल पी सकते हैं. हाँ, सुलगना, बेल जूस, यस, you can have. I'll confirm it with my mentor, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, but I think you can have it. खनक, फ्लैक्सीड produces a lot of heat in the body. नहीं, मैंने क्वेश्चन में को याद है, मैंने इसका आंसर ये दिया था कि फ्लैक्सीड का ऑयल इज गरम. अलसी ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल इज बहुत गरम है. मैंने 1 चम्मच पिया था, मेरे पूरी पीठ पे दाने आ गए थे. फ्लैक्सीड जब आप खा रहे हो रॉ पाउडर फॉर्म में, इट इज नॉट एज अ होल, इट इज नॉट. आई एम ईटिंग फ्रॉम 2013-14 एंड कुछ भी नहीं हुआ. 50 ग्राम्स मैंने स्टार्ट किया था, नाउ अब मैं 25 ग्राम्स कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये एक मिथ है कि अलसी गर्म होता है. अलसी का तेल गर्म होता है, ठीक है. सर, कैन वी ईट बनाना सिर्फ 1%? बिल्कुल, आप दिन के 2 दर्जन बनाना खाइए, कोई मोटा नहीं होगा. अगर मोटा होते तो बंदर सबसे मोटे होते. हार्पर, स्लीप बाय 11, वेक बाय 6:30, बट माय डे स्टार्ट्स 4 PM. Before PM my energy level is too low. हार्पर, one more thing you can add, आपको हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद 4-5 डेट्स खाने हैं, खजूर, ठीक है. ब्रीदिंग, खजूर, ब्रेन की एक्सरसाइजेस, वॉलनट, हर्बल टी, ये ब्रेन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो. और जो मैं ब्रेन एंड न्यूरॉन्स डाइट में जो लिस्ट दूंगा उसमें से ज्यादा खाना है, ठीक है. राधिका, आई रिमेंबर एवरीथिंग लाइक what my birthday dress is in first standard. I remember everything from school, college I have learned, but recently I have observed I forgot very small basic things, like I had completely forgetting about epithelial layer. You said it is endothelium layer. Endothelium layer जो होता है उसको क्लीन करने के लिए. No worries, ये क्या हो रहा है, ये जो ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम जब हो जाता है तब होती है, राइट. आप इस डाइट पे आओ राधिका, अगेन यू विल बी रिमेम्बरिंग योर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास स्कूल ड्रेसेस. ट्रस्ट मी, जस्ट गिव मी 30 days. Just give your body 30 days with this diet, raw, right? Cold, cough and sinus, it's told not to eat citrus fruit. Is it true? It is half true. आप 15 days डाइट करो, 14 days 2 weeks डाइट करो, उसमें सिट्रस मत करो, ठीक है. 14 days के बाद योर इम्यून विल बी स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन कम इट. गला खराब है, सिट्रस विटामिन सी ज्यादा जल्दी ठीक करेगा. जिसका गला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो मैं बोलता हूँ कि आप जब तक गला आपको ठीक नहीं लग रहा है तब तक आप मत ऐड करो. यू कैन ऐड डिफरेंट vitamin C's, like guava has vitamin C, mango has vitamin C. There are a lot of fruits which has vitamin C. वो add करो. Sulagna, I have answered. Sulagna is asking, can I take phone number of Ritu Kumari? You will be coming into the group, right? कल मैं आप सबको दूसरे ग्रुप में ऐड करूंगा, तो वहाँ पे आप लिखोगे hi, सब लोग लिखेंगे hi, my name is this, I am suffering from this, I need an accountability partner. तो वो अगला आदमी देख लेगा, अगर इसको भी थायराइड है, इसको भी ये है, तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगा. तो आप दोनों बन जाओगे. वो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा कैसे. ओके सर,
लेमन इज सिट्रस सो इट इज अलाउड फॉर बीपी पेशेंट्स। नो बेहा नॉट नेहा, अभी मैंने मना कर दिया लेमन जब तक आप मेडिसिन स्टेपल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सिट्रस लेना ही है तो मेडिसिन के बाद कम से कम 4 घंटे बाद, और जब सिट्रस ले लिया फिर 4 घंटे मेडिसिन नहीं खानी है, राइट? ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस आई हैव टेकन नाउ। हु वांट्स टू कम ऑन ऑडियो? Just raise your hand. Mrinalini was saying, where is Mrinalini? Mrinalini is here. Mrinalini, I asked to unmute. Mrinalini, I have asked to unmute you. Please unmute yourself. Sir, I have one question. I didn't have my menses from last month. You are taking? I didn't have my menstruation from last month. From last month, the month before that, it was not so heavy, but not normal. Is it the beginning of my menopause stage? What is your age? Running 45. It can be. It can be. Mood swings होते हैं? Mood swings? No. Irritation, No, frustration? नहीं होते. Mood swings नहीं होते. पर 1 साल पहले ऐसे हुआ था, एक महीना मिस हो गया था. बाद में मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, तो उससे ये साइकिल फिर से ठीक हो गया. It can be. But see, अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि ये राइट टाइम आ गया है या आने वाला है. Yeah. What we can do is we'll simply come on the diet. Okay. अगर तो वो नहीं आया होगा मेनोपॉज आपका, तो you simply तो आपकी साइकिल नॉर्मल हो जाएगी. Okay. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Good. Right. So this is it, friends, and I think I've taken all the questions. And tomorrow again, day 5. You know, the most amazing day. We'll do a revision. I'll give you some more insights. I'll give you a 60-day NNP challenge. Right? I'll give you a 60-day NNP challenge, and I'll be taking to a different group. There are a lot of students like you who are into the group, and it's a very active group. So if you're excited about tomorrow, just type SUT. SUT means see you tomorrow. Just type SUT. SUT is see you tomorrow. Yeah? Cool. So bye-bye. Thank you. And thank you very much for listening me for this 3 hours. And trust me, it was one of the very great session. And tomorrow some more insights. And let's do it together, right? So I'm with you on this journey. Bye-bye. See you. Thank you so much. Thank you. Video I will be sharing till tomorrow 11-12. तो थोड़ा अपलोड होने में पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है वीडियो में. फर्स्ट जूम इसको अपलोड करेगा, डाउनलोड करेगा, फिर वो वीडियो डाउनलोड करके फिर उसका प्रोसेसिंग चलती है, तो मैं सो जाता हूँ, फिर मैं सुबह उठ के करता हूँ, उससे टाइम लग जाता है, राइट? तो 12 बजे तक आपके पास वीडियो आ जाएगी, राइट? थैंक यू.